Hello everyone, this question appears in class 8th NCERT chapter of rational number. This is 10th question of its exercise 1.1. So the question says that the rational number that does not have a reciprocal, so हो जाएगा हमारे पास 0 because of reciprocal of 0 is 1 by 0 which is not defined. Second, so first का आंसर हो जाएगा हमारे पास 0. Then second, the rational number that are equal to their reciprocal, so हो जाएगा हमारे पास 1. तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1. सो सेम 1 ही हमें मिल रहा है. एंड -1, सो -1 का रेसिप्रोकल भी हो जाएगा -1 बाई 1 इज इक्वल टू -1. सो हमारे पास ये हो जाएगा सेकंड का आंसर. द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, सो 1 एंड -1. थर्ड, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, हो जाएगा हमारे पास 0 बिकॉज ऑफ नेगेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0. सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 0, सेकंड का 1 एंड -1 एंड थर्ड का 0. थैंक यू.